session of the series today, we have Ujjwal Bhardwaj with us. He's a 4-star coder at CodeChef, chapter lead at GFC ACET, 5-star hacker rank problem solver, and second, he has secured All India rank 165 in Tech Geek coding contest. Welcome, Ujjwal. Over to you. Yeah, guys. So as we are going to discuss, Geeks for Geeks. As we first come to college, like the first thing our teachers and our seniors just tell us that the first site that we come to know is Geeks for Geeks, and talking to Geeks for Geeks. Geeks for Geeks is a computer science portal, and Geeks for Geeks is a kind of site in which you guys can just go and learn DS, Algo, and all the things that you want to learn. And guys, just tell me. So I'm sharing my screen. Just tell me that it's visible or not. Yeah. So just tell me that my screen is visible to you guys. Okay, fine. Yes. Yeah, yeah. I'm just sharing out my screen. Is it visible? Okay. Just wait Yeah, for a while. Yeah, just wait. Yeah. So just tell Yeah, me. it is visible right now. Okay, fine, fine. Okay, guys. So this is the site. I mean, Geeks for Geeks. Can you guys see it? I mean, just give me a confirmation from your side. Guys, can you see the page of Geeks for Geeks? yes. Okay, fine. So yeah, guys, this is the page of Geeks for Geeks, and this is the first phase, and you guys can see the things like tutorials, students, jobs, and courses, and and the things like DSA, coding practice, and all those kind of things. Okay, Hello, I'm so sorry to interrupt you, yeah. but we can just see your browser and not the website actually. Okay, wait. Just give me a second. I guess there are some issues from my side. Wait, just give me a minute.
Okay, guys, just tell me, can you see the Geeks for Geeks page? Yeah, it is Yes. visible. Yes. Okay, yeah. So, guys, this is the page of Geeks for Geeks, and basically, the first, when I just came to college, so the first thing, so I get to know from the seniors and the teachers is Geeks for Geeks, and Geeks for Geeks is basically a site. Uh, like we are doing something and we got stuck somewhere, then our seniors, our teachers just see us to go to Geeks for Geeks and search out your problems, and you gonna get the solution of the problem. So yeah, this is the front page of Geeks for Geeks, that is geeksforgeeks.org. And so on this page you guys can see there are tutorials, a student corner, jobs, courses, and all those things like data structures, algorithms, topic wise practice, the languages like C++, Java, Python, competitive programming, web dev, puzzles, GFG, and all those. So you guys get to know that GFG has more than 21,000 web pages, and you know going to each page is quite difficult, but I am going to explain these things in short. So yeah, the first thing is, so in this page you guys can search out all the things you get to know. Like the main thing is the search button. Like suppose you want to learn C++, Python, and Java, and some sort of you want to search, like you guys want to know what is strings in C++, what is like in Java, then you can just come to this page and type strings C++, and after searching you gonna see the string class and C++, and you just come to this and study whatever strings are in C++. And here on this page you gonna see the sections like practice dsn algorithms, data structures, the interview corner, the languages, the cs subjects, the subjects like dbms, operating system, cn, theory of computation, compiler design, dash dash dash. And after this you gonna see gate section. After this web tech, software designs, school learning, and all those things. And you just come to each section and explore all the things you want to. Okay, uh, you just tell me that my screen is visible or not. I'm getting Uh, confused. yes, sir. Your screen is visible. Okay, fine. So I after wanted to this, ask, yeah, sure. in web technology, there is web development, right? Yeah, there is web development. Okay. Yeah, okay. So there are web technologies, as you guys says, and if you come to this section, then you gonna see like css, javascript, 38js, bootstrap, php, all those kind of things. Suppose you want to study css, then just come to this web tech and tap on css. So after on tapping you get to you will get transferred to this page, like this is the css, and you can just study out the all the things that are in css, like the basic format of css, examples are given, and all the things. Suppose you want to learn what is bootstrap, then just come to this section, tap it, and there will be a page in front of you for bootstrap tutorial. Then after there is section that is student section. On this section you gonna see the campus ambassador, school ambassador, geeks of the month's placements, course competitive, geek on the top careers, and all those kind of shit. Suppose on campus ambassador, there shall be some student from your college that will be campus ambassador of geeks or geeks. Then you just come to this page, and you can just see the campus ambassador that are in your college. uh, you can just see it from there. uh, there is section
no more. And you can see that who is the campus ambassador of your college. You can just see it from there. I guess this is the place. No. Yeah, so I gonna tell you this after the session. I mean, after some time. Okay. And after that, there are section for geek of the month, campus geek of the month, competent coding, and all those things. And after, there is a portal for jobs. Like suppose you guys want to get some jobs, then just come to the section and tap here, apply for jobs. And you gonna see here all the jobs that are currently, I mean, like they are with Geeks for Geeks. Uh, so as you guys can see, there are the companies, the companies the, who are currently, I mean, looking for the employees. And after this, you guys can just go on their portal and apply for jobs. So after this, there is a section for post a job. Suppose you want to post a job, so you can just come and you can post all the things, like all the details, and post it here. After this, there is a section of courses. Suppose you want to get out some courses from GFG, like data structures and algorithms, the courses for get some sort of courses for data science development, then you can just come to this portal and search out for your, I mean, the courses that you want to get. Like suppose I want to get some courses for DS and algo, then just come to this section and tap it. And there you guys can see the courses that Geeks for Geeks keeps to you. And you can just basically explore out these courses, that what these courses gives out to you. Hello. This is the Uh, courses. Yeah. are these courses paid or they are Yeah. These courses are paid, so but you how guys much can is use this the code. I mean, by these codes, you can get some sort of, so like by okay. just tell me that I am. हेलो सिंस देयर इज अ मतलब काफी सारा कंटेंट है ना Guys, मतलब just tell me कि मेरा sound आ रहा है. हाँ Like आपका there साउंड are आ रहा some. है Yeah. Just tell me. हाँ What you आपका gonna ask? साउंड आ रहा है Okay. Fine. हाँ मुझे ये पूछना था कि काफी सारे मतलब कंटेंट ऐसे भी है ना कोई भी टॉपिक के ऊपर तो पेड Yeah. कोर्सेज लेना जरूरी होता है क्या No, you guys can actually go out to, like आप देख सकते हो. So you can just come out to the course and see what GFG is giving out in this course. And आपको अगर like ये course अच्छा, I mean, you get to know that yeah, this is a good course, then just take it. I mean, there are different courses from different sizes. Like ऐसा जरूरी तो नहीं है कि Geeks for Geeks दे रही है तो ये अच्छा ही है और ये हमें चाहिए ही. I mean, हाँ. just go out to the course, see the contents, and आपको अगर अच्छा लगे, then just buy out the course. ओके चलेगा so Yeah. is there any way that we can differentiate कि कौन सा कोर्स बेटर है कौन सा नहीं है ऐसे Uh, रिव्यूज वगैरह you कहीं can पे just go to refer कर YouTube and type here that what are the best courses. Suppose I want to get some courses for competitive coding. Suppose that. So I'm not saying you guys ki just come on GFG and purchase this course competitive coding. Like you guys first आप देखो डिफरेंट चैनल्स पे जाओ. आई मीन सर्च करो, गूगल करो कि कौन सा कोर्सेज बेस्ट है, एंड देन कम आउट टू दैट साइट एंड देन गेट आउट द कोर्स. दैट्स द वे. okay sir Okay, so after this the courses, yeah, so after these courses there are some sections for data structures, the algorithm, topic wise practice, C++, Java, Python, test. Suppose I want to learn data structures. Okay,
So I can just come to this section, tap over it, and there are the section of data structures like stack, queues, binary trees, heap, graph, matrix, and all those things. Just come out to your the topic that you want to get. And suppose I want to see some contents of introduction to arrays. Just tap it and you gonna see what is this, how can we use it, and all those things. Okay, after this there, yeah, yeah. Oh, sorry. Yeah, just tell me, can you guys can see the page? Okay. So this is the section for data structures. Suppose I want to get some data structure. Suppose I want to learn stack, use binary trees, heaps, sorting, all things. Just come to this section and tap to the topic that you want to learn. Suppose I want to see what is this topic, then just come to this and see it. And आपके सामने एक पेज ओपन होगा. This page tell us what is this, हम इसका use कैसे कर सकते हैं, like the things that you can, I mean, you can just see out. After this there is section of topic wise practice. This section is quite good. So what is this? Basically topic wise practice. एक्चुअली geeks for geeks में बहुत सारे contents हैं. एंड सपोज आप geeks for geeks पे आए एंड जस्ट आप देख रहे हो कहाँ क्या है, सो यू गोना गेट कंफ्यूज्ड कि हमें कहाँ से क्या करना है. सो व्हाट यू गाइस कैन डू द मोस्ट, आई मीन सपोज आपको प्रैक्टिस करना है, you want to practice some sort of topics, then just come to this, I mean topic wise practice. एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे टॉपिक्स को फिल्टर्स कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टीज. सपोज आई वांट टू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक लाइक सपोज सॉर्टिंग. सो व्हाट वी कैन डू, we can just come to this and tap over sorting. So yeah, after this आप देखोगे कि कि आपके सामने जो भी आएंगे क्वेश्चंस थे वो सारे सॉर्टिंग से ही होंगे. and suppose you guys to want practice some specific question from some specific companies, like किसी कंपनी का क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है कि like suppose we want to practice some question from Facebook, then just come and tap on Facebook. and फिर आपके सामने जो भी आएंगे क्वेश्चंस वो फेसबुक में कभी ना कभी वो पूछे गए हैं. So yeah, so you can come to this and practice the questions from Facebook. and suppose you guys want to practice some questions on the basis of difficulties, I mean you first come to GFG and you want to start. Okay, then just come to this section and tap our basic easy, I mean आपको जो practice करना है just tap and yeah, just go on. आप यहाँ से practice कर सकते हो all the questions. and there is a doubt कि हम GFG पे practice करें तो हम कैसे करें, like GFG का compiler कैसा है, हम खुद का compiler करें use, BS code use करें, क्या हम use करें. so yeah, GFG में the best thing is what कि GFG का अपना खुद का है all the things. so what you guys can do, अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है just come to that question. suppose I want to solve the question sum of the array. so I just came to this question and here this is the question and आपको इस सेक्शन पे कोड लिखना है. so you don't तो आपको जरूरत, आई मीन आपको कोई नहीं है जरूरत कि आप कोई एक्सटर्नल कंपाइलर यूज करो, कोई भी आई मीन पीएस कोड, आई मीन ऑल दोस थिंग्स आप यूज करो. सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे आ सकते हो एंड जस्ट टाइप योर कोड. सपोज इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द सम. सो
इसमें ये फंक्शन हमें दे रखा होता है. जीएफटी में क्या है कि हमें फुल फुल कोड नहीं होता है करना, जस्ट वी नीड टू कंप्लीट द फंक्शन. सो आपको मैं एक क्वेश्चन इस पे सबमिट करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होता है. सो 4 int I equal to 0, I less than n, I plus plus, and what we can do, we can form a variable int sum, and we can assign 0, and we can just do some plus equal to AI, and after this we just need to return the value of sum. And after code, जब आपने कोड कर लिया, then after आपको ये कंपाइल करना कि आपका कोड सही है या फिर कहीं पे आपने कोई सेमी कॉलन या फिर कुछ छोड़ दिया है आपने. सो या व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पे है कंपाइल एंड रन. आप इस पर टैप करोगे तो सी यहाँ पे बोला है ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप. सो यहाँ पे हमें दे रखा है ARR, बट क्या यूज किया है ए. तो सी ARR क्या, एंड आफ्टर कंपाइलिंग you gonna see, yeah, compilation completed. इसको चाहिए आउटपुट 10, एंड जो जो कोड किया हमने उसका भी सेम ही आया आउटपुट. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सबमिट फ्रॉम देयर. या सी दीज आर द टेस्ट केसेस, एंड या सारे टेस्ट केस मेरे पास हो गए. ओके. So suppose you guys want to solve this problem in Python or in Java, or like आपको जहाँ भी करना है, you can just come to this tab and just tap it. अगर आपको Python पे कोड करना है, just select Python from here. आपको अगर JS पे कोड करना है, just select JavaScript from here. Like अगर आपको Java में कोड करना है, just select Java from there. Okay. So these are the things. And after some time मैं आप लोगों को एक quite, I mean there is a thing like POTD. मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये POTD क्या होता है. ओके. सो आफ्टर दिस, okay, suppose you guys want to आपको अगर CPP सीखना है, Python सीखना है और कुछ टॉपिक्स देखने हैं. I mean suppose कि मैंने CPP कहीं से सीख लिया and कुछ टॉपिक में मुझे डाउट्स आ रहे हैं, then come to this CPP. एंड सपोज कि मुझे कोई टॉपिक देखना है लाइक स्ट्रिंग्स इन C++ और लाइक कोई भी टॉपिक्स में, देन जस्ट टैप ऑन द टॉपिक, एंड जो आपके सामने पेज होगा ओपन, आप उससे उस टॉपिक को रीड कर सकते हो. सपोज आई वांट टू गेट आउट एरे एंड स्ट्रिंग. ओके. देन you can, what you can do, just tap here, एंड आप यहाँ से एरेज क्या होता है, कैसे काम करता है, ऑल द थिंग्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो. सपोज आई वांट टू गेट आउट सम टॉपिक्स इन पाइथन और इन जावा, देन जस्ट टैप ऑन पाइथन, एंड आप यहाँ से पाइथन के आई मीन जो भी होते हैं टॉपिक्स, और जिन टॉपिक्स में आपको डाउट है, यू कैन गेट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पेज. ओके. सपोज like see these are the topics हमें Python में हम कैसे console से लेते हैं input, and all the things you will get out from here. There is a section of competitive coding. आप इस पे आते हैं तो एक GFG का कोर्स है कॉम्पिटिटिव का. so you guys can check out this course, and after some time मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, there is a thing that is POTD. And by solving POTD, you guys can get some, I mean quite good things like bags, t-shirt from GFG for free of cost. And this is this is the best thing of Geeks for Geeks. So आपको ये मैं वो कैसे आप लोग को ये करना है, टी शर्ट और बैग्स, वो मैं कुछ टाइम बाद आप लोगों को बताऊंगा. आफ्टर दिस सपोज यू वांट टू लर्न वेब डेव, देन जस्ट कम, एंड आपको यहाँ से जो भी है सीखना, बैक एंड फ्रंट एंड, आप यहाँ से देख सकते हो. ओके. सपोज CSS, JavaScript, Bootstrap, like all topics are, यहाँ पे दिया गया है. आफ्टर दिस web dev, puzzles, you guys can explore all these things. Okay. And okay, so come to POTD.
So as I told you, there is a section called POTD. So ये POTD क्या है? POTD is actually a thing आपको per day GFG सिंगल क्वेश्चन इस पे पोस्ट करती है, ओके? एंड आपको इस पे क्या करना है, जस्ट आपको इस पे आना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड फिर आप कहो कि ठीक है, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, बट ये सॉल्व करने से मुझे क्या होगा, लाइक व्हाट वुड आई गेट? सो एक्चुअली देयर इज अ थिंग दैट इज गीक, आई मीन आपको इस पे पॉइंट्स मिलते हैं। लाइक आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सो यू गेट अ सिंगल पॉइंट ऑन दिस साइड, ओके? सो देयर इज अ थिंग, आई मीन POTD डैशबोर्ड, okay? And you guys can see these are the coins, okay? Just tell me कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, और is it stuck? दिख रहा है। ओके फाइन। सो इसमें क्या होता है कि आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस पे एक पॉइंट मिलेगा, एंड बाय दिस पॉइंट आप इससे कूल, आई मीन कूल बैग्स, कूल टी शर्ट आप इससे आई मीन कर सकते हो। लाइक सपोज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि what you guys can get out from here. Okay, so suppose अगर आपके पास 50 कॉइन्स है, देन आप GFG के एक कूपन वाउचर यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये 500 का है। सो कोर्सेज का जो प्राइस है, सपोज द कॉम्पिटेटिव कोडिंग ऑफ GFG कॉस्ट 2000, सो उस कोर्स पे आपको 500 डिस्काउंट आपको हो जाएगा। एंड सपोज आपके पास अगर 100 गीक बिट्स है, सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से इस टी शर्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट रिडीम कर सकते हो। सपोज आपके पास अगर 200 पॉइंट है, तो आप ये कूल दिखने वाला जो बैग है, आप यू गाइस जस्ट कैन, आप यहाँ से ये बैग ले सकते हो। सो अभी मेरा 2-3 दिन पहले स्वाई लाइक 100 पॉइंट कंप्लीट किया था। सो ये टी शर्ट मैंने किया था, like so I got this t-shirt, you guys can see it, and this is the cool thing, okay? So क्या करना है, just come to Geeks for Geeks, हमें एक क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व होता है करना, just a single question each day, and सॉल्व करो and get out the points, and उससे आप क्या करो कि टी-शर्ट्स, बैग्स, आपको जो भी चाहिए you can get out, okay? After this POTD, these are the things like courses जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। You can just come to this and get out the courses, and अगर आपके पास geek points है, so आपको इस पे discounts कूपन भी like you can get, suppose किस कोर्स का दाम है 27 something something, so आपके पास अगर 50 coins है suppose, तो कोई भी कोर्सेज पे आपको 500 का डिस्काउंट हो जाएगा, कोई भी कोर्सेज, ओके? And after this there is a thing, yeah. So after this there is a thing called contribute. So what you can do, you can I mean contribute to Geeks for Geeks, आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड फिर आप कहो कि ठीक है मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या, like what sort of benefits so I would get from Geeks for Geeks. So after so आपने कोई आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया, ओके? so I guess Geeks for Geeks give 1000 for a single, I mean आप अगर एक आर्टिकल पेस्ट करते हो तो उस पे आपको Geeks for Geeks I guess 1000 रुपए देती है। आई एम नॉट श्योर बट इट्स 1000, okay? टॉपिक्स फॉर गीक्स का यूज कैसे करते हैं, एक्चुअली आपने देखा होगा कि इस पे बहुत सारे कंटेंट्स हैं, यू गेट टू कंफ्यूज बिटवीन ऑल दोस थिंग्स कि हम कैसे क्या करें, कहाँ से क्या करना है। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट कम टू गीक्स फॉर गीक्स, देयर इज अ सर्च बार, आपको जो भी चाहिए, व्हाट यू गाइस वांट, जस्ट सर्च इट। सपोज आई वांट टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन स्ट्रिंग्स, then just type here strings C++, okay? And आपको यहाँ से C++ strings just tap on it, and आप यहाँ से strings के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। I mean
the questions which are from strings. Okay, so this is the best use. आपको कहीं पे like जाना नहीं है कि हाँ मैं इस पे गया, इस पे गई, then after मैंने choose किया, sort किया, फिर मैंने solve किया. So the best thing is just come to this search bar and search what you want to learn or practice, or like आपको जो भी करना, just search on it, and you can definitely get it from this. Okay, suppose I want to see the contents of JavaScript, so I can just type here JavaScript and search it, just tap on it, and yeah, this is the page for JavaScript. So आप यहाँ से you guys can get like क्या होता है, कैसे work करता है, इसमें क्या क्या contents है. So yeah, this is the things that is I mean जो Geeks for Geeks में है. I mean these are the things. And after this, this is like companies learn news tech. I mean the languages like Python, Java, C++, C Sharp. These are the topic for web dev, and this is the contribute section. Yeah, so that's all Geeks for Geeks में बस यही है. And after this you guys can just come to this site and you can just explore. आप यहाँ से देख सकते हो, just come to this site and search each I mean just go to each part and आप वहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे क्या है. And like after आप यहाँ पे 2-3 बार जब आओगे you guys get to know okay कि ये चीज ऐसे काम करती है. Okay, so guys, आपको कोई डाउट हो तो you can ask or just type in chat box. So, what is the difference between Java and JavaScript? Yeah, basically JavaScript हम क्या करते हैं कि when we do I mean web dev kind of things सब हम JavaScript का यूज करते हैं. Basically हम Java and JavaScript हम दोनों कोडिंग में भी यूज कर सकते हैं, but basically we use JavaScript in web dev and Java in our simple coding, I mean competitive coding and all those kind of things. So This is- what we should learn or more focus on Java or JavaScript? Yeah, see, so I like जो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है, like they are in their first sem, second sem, third sem, fourth sem, so उनको ये काफी रहता है डाउट कि what we should study, C, C++, Java, Python, हम पहले Python करें, Java करें, CPP करें, like हम क्या करें, हमें डाउट होता है. So like मैं खुद का एक शॉर्ट स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. When I came to college, like जो भी मेरे seniors थे, they are not in like they are placed in some sort of good company, but like companies उतनी अच्छी नहीं है. And after coming to college, I get to know that what is competitive coding and all those kind of things. So yeah, the same question came to me, like what should I study? What should I do first? Like पहले मैं C करूँ, C++ करूँ, Java करूँ, Python करूँ. So yeah, इसका कोई ये नहीं है कि हाँ कि मैं Java करूँगा तो like ये अच्छा है, CPP अच्छा है, Python अच्छा है. But most of the coders choose C++ और Java. And फिर आप कहोगे कि why not Python? So Python is somewhat slow in compared to CPP and Java. So बहुत सारे जगह like ऐसा कम होता है, but like कुछ जगह पे वो TLE आ जाता है, like some sort of time exceed करता है. So due to this all the persons who do competitive coding and like yeah basically coding, so they use C++ or Java. Okay, sir. Okay guys, और कोई क्वेश्चन आपका है, like कोई भी क्वेश्चन पूछो. What you guys want, like आपको जो भी है पूछना कि why should we, like हम कैसे स्टार्ट करें CP and like आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, you can just ask to me. This was very insightful. हाँ सर, अगर वेब डेवलपमेंट सीखना रहा तो स्टार्टिंग कैसे करें और मतलब कितने Okay. महीने में ऐसे सीख सकते हैं अच्छे तरीके से?
वेब डेव का एक्चुअली किसी चीज का कंपटीशन का कोई टाइम नहीं होता. लाइक सबका एक स्पीड होता है अपना. लाइक सम पर्सन्स कैन कंप्लीट इट इन 30 days, कम कैन कंप्लीट इट लाइक किसी को एक साल भी टाइम लग जाता है. एंड टॉकिंग कि हम कहाँ से करें, देन आप यूट्यूब पे देख सकते हो. देयर आर सम फ्री कंटेंट्स, सो आप वहाँ पे देख सकते हो. एंड अगर आपको पेड चाहिए देन या so you can just check out some sites like coding ninjas and like बहुत सारे sites है, so you can just explore those. और सर मतलब प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे अब हमने सीख लिया तो अगर Okay. थोड़ा सा भी गैप हो गया तो भूल जाते हैं. Yeah. सो वीकली प्रैक्टिस एंड ऑल कैसे करें? Okay, yeah. So suppose कि CSS मैंने पढ़ा, then after do some kind of, आप उस पे कुछ like चीजें करो, आप उस पे कुछ try करो कि हम CSS से जो हमने सीखा हम कैसे इसको use कर सकते हैं. some I mean कुछ pages form करो, just do some practice. आपको I mean वो practice आपका इसी से हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू. Okay, what should we learn from backend PHP and React? So I would suggest कि PHP is a kind of outdated. I mean PHP is good but वो पहले होता था use. So I would go for, I mean आप एक बारी explore करो. And yeah, PHP is kind of outdated thing. So I would not go with this. So you can use, I guess, no, I mean React for this. Okay, guys, कोई और doubt हो then you can Sir, ask. we have one more question in the chat box. Okay. DSA और OOPS कौन से language में करना चाहिए? Yeah, so I told you कि ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि हम लाइक किस में करें, आपको जो अच्छा लगे. बट बेसिकली क्या होता है कि वेन जब स्टार्ट किया था मैंने, सो देयर इज अ थिंग कि सपोज कि मैं पाइथन में कर रहा हूँ डीएसए एंड ऊप्स कोई भी चीज, एंड कहीं पे मैं स्टक हो गया. बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि मैं जो मेरे सारे फ्रेंड्स है दे आर डूइंग द सेम थिंग इन जावा एंड सीपीपी. सो आई कांट कि आई मीन अगर मैं कहीं फंस गया तो मैं उनसे पूछ नहीं सकता हूँ बिकॉज दे डोंट नो पाइथन. सो बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कोडर्स डू डीएसए एंड ऊप्स इन जावा और सीपीपी. सो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो. कोई क्वेश्चन एक्सेप्ट फ्रॉम दिस? ओके, हाँ, एक डाउट आती है जनरली स्टूडेंट हो कि हम क्या यूज करें. लाइक हम VS कोड यूज करें, पाइचार्म यूज करें, लाइक ऑल दोज थिंग्स. ये कॉमन है डाउट कि हम क्या यूज करें फॉर आवर कोडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. सो व्हाट यू गाइस कैन डू, like get stick to a single, I mean compiler or IDE. आप जो यूज करते हो एक ही यूज करो. like suppose till now क्या हो रहा है कि अभी लोग VS कोड को यूज कर रहे हैं ज्यादा. उसमें क्या होता है कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशंस. आप वहां पे सपोज यू want to code in Python, then आपको Python डाउनलोड नहीं करना. You just can go there, download the extension of Python and you can just code out there. अगर आपको like you want to code in JavaScript, then just go out, download the extension of JS and you can just code out there. So yeah, this is a common doubt between first year students and second year students that हम कहाँ पे practice करें, हम कहाँ पे code करें. So yeah, just you can just check out VS Code once. This is quite good. You guys have any doubt? Hello, sir. Yeah. Does GeeksForGeeks provide certificates also? For what? For any courses? Are Yeah, there yeah, any sure. courses? Yeah, sure. So if so you guys get to purchase some course from GeeksForGeeks, then after आप जब उस course को complete करोगे, then GFG will give you a certificate for that course. Thanks. Okay. कोई भी
doubt हो आप लोग का, then you guys can just ask freely. सर मेरा और एक डाउट था Yeah. कि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, Okay. तो कभी कभी ना सोच नहीं पाते कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो कोई मेथड कैसे क्वेश्चन को क्रैक करें? एक्चुअली किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, लाइक सपोज मैं व्हाट्सएप पे किसी क्वेश्चन को देख रहा हूँ, देन आफ्टर लाइक सॉल्व करने से पहले क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन देख रहे हैं एंड हमने एक बार ही देखा एंड वी जस्ट स्टार्ट टाइपिंग कोड. दिस इज नॉट द राइट वे. तो फर्स्ट थिंग इज कि आप क्वेश्चन को पढ़ो. एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके आई मीन जो क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर ही उसका सॉल्यूशन होता है, लाइक जो हम स्किप करते हैं जनरली. हम आई मीन सपोज व्हाट्सएप पे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट ओके 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 दिस मैंने एक बार पढ़ा एंड वी जस्ट स्टार्ट टाइपिंग द कोड. दिस इज नॉट द राइट वे. फर्स्ट आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो. ओके, देन आप जस्ट ट्राई टू, आप उसे कॉपी पे आई मीन जस्ट यूज पेन एंड कॉपी एंड ट्राई टू आई मीन कॉपी पे आप करो कि एक्चुअली क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है. Then just solve that question first in your copy, I mean by pen and paper, and after solving just क्वेश्चन को सबमिट करने से पहले चेक आउट फॉर सम कॉर्नर केसेस. एक्चुअली आता है कि हम कोड करते हैं, सो हम कोड तो कर देते हैं बट कुछ कॉर्नर केस को हम उस पे लाइक हम करते नहीं है. सो जस्ट थिंक कि इस पे कॉर्नर केस क्या हो सकता है जहाँ पे कोड मेरा फेल हो जाएगा, एंड जस्ट think out it, and after वो सब करने के बाद then just code it and submit it. ऐसा नहीं है करना कि क्वेश्चन को मैंने पढ़ा and just we start typing the code and okay yeah. This is not the right way. And I have a question. yeah. सर अगर हम बिगनर है तो हमको कोड जो हम पढ़ रहे हैं उसको पेन एंड पेपर पे लिखना चाहिए या लिखने के बाद में कंपाइलर पे टाइप करना चाहिए? या फर्स्ट क्या होता है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, देन अगर क्वेश्चन इजी है, लाइक स्ट्रिंग दे रखा है हमें, लाइक सपोज कि हमें सम करना है ऑफ ए एंड बी, सो आपको उसको पेपर पे लिखने की नहीं जरूरत, यू कैन जस्ट टाइप द कोड. बट अगर कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आई मीन आपको कुछ सोचना पड़ रहा है कि हम ये कैसे करें, टेस्ट केस देख के आ नहीं रहा है समझ में कि कैसे करें, देन फर्स्ट ट्राई टू गेट आउट दोस क्वेश्चंस ऑन योर पेपर. आप उसे पेपर आप come to your I mean your question and type out the code. That's the way. Okay, ऐसा sir. नहीं ऐसा नहीं है करना कि हाँ ठीक है क्वेश्चन देखा एंड वी जस्ट स्टार्टेड टाइपिंग आवर कोड. एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन वी आई मीन ऐसा कॉन्टेस्ट पे भी होता है कि हम जब कॉन्टेस्ट में होते हैं या हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, देन व्हाट वी गाइस डू, हम चाहते हैं कि यार हाँ जल्दी से इसे सॉल्व करें, सबमिट करें. बट क्या होता है कि बस उसी के चक्कर में हमारा अगर कुछ भी आई मीन कुछ अगर छूट जाता है, देन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. उस पर हमारा काफी टाइम लग जाता है. सो द बेस्ट थिंग इज कि आप उससे पहले पेन पेपर पे सॉल्व करो एंड देन आफ्टर टाइप इट. दैट्स क्वाइट गुड. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, so thank you, Ujjwal. It was indeed a very great session and really helpful. Thanks for your precious time and knowledge. Thank you guys. Also, guys, see the recording of this session in the official channel of Code Chef YouTube. Thank you, everyone, for joining. Thank you, guys.